Good morning, everyone. So, today we are going to discuss your 21st mock paper. ठीक अच्छे तो स्टार्ट करवा आगु एठी मु किछि बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देबी कोर्स रिलेटेड बट बिफोर दैट आल्सो मोर ऑडियो एंड वीडियो दीटा जाक क्लियर अछि कि नै वीडियो इन द सेंस मु जहा एठी पीपीटी ओपन करछि से सब लेटर्स हो स्क्रीन ऊपर जहा भी स्लाइड्स हो सेगुडा सब क्लियरली विजिबल अछि कि नै एंड ऑडियो इनफ ऑडिबल अछि नै मते एठी लाइव चैट रे जे जणे भी एठी ऑनलाइन अछंती मते एठी टिके कहि दियंतु कि क्लियर अछि तापरे मु स्टार्ट करबी आजिर सेशन रे भी हमर 6टा क्वेश्चन रहइबो ओके एंड 6टा क्वेश्चन मु समस्त को इंडिविजुअली निजे रीड करिकि भी समस्त को ताकू रीड करिया को टिके कॉम्प्रिहेंड करिया को टिके ब्रेनस्टॉर्म करिया को भी मु 10 टू 15 सेकंड्स देबी डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन सो फर्स्ट मते एठी आगो कहि दियंतु कि ऑडियो क्लियर अछि कि नाही आई एम गिविंग 60 seconds. ओके तो रिप्लाई आसी गलानी जने कहउचंती क्लियर अछि ठीक अछि आमे डिस्कशन स्टार्ट करिया पूर्वरु एठी आगटे देखि दियंतु जो माने ओएस और आईएएस 2026 और 27 पई प्रिपेयर होतिबे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू फाउंडेशन बैच एठी लॉन्च हे सरछि जोटी कि आपण चाहिले इ कोर्स टी को ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो दीटा जको मोड रे नै परिबे एंड इंग्लिश मीडियम की ओडिया मीडियम जो मीडियम रे आपण एग्जाम देबे फॉर्म फिल अप करथिबे बोथ मीडियम रे अवेलेबल अछि आपण कंफर्टेबली जोतरे कंफर्टेबल सेतरे नै परिबे देन ଆମର वन ऑन वन मेंटरशिप रो भी प्रोविजन रोचे व्हिच इज रियली वंडरफुल एंड फर्दर किछि यदि कोर्स रिलेटेड किछि क्वेरीज थिबो एडमिशन केमती कोन करिवे तो पचारियार थिबो तो ए नंबर जो स्क्रीन रे देइछि एथिरे कांटेक्ट करि कि जाई कि पचारि परिबे ठीक अछि स्टार्ट करिवा फर्स्ट क्वेश्चन आजिरो Explain the continental drift theory of Alfred Wegener. How did it contribute to the development of modern geological theories? क्वेश्चन टिके रीड करंतु निजे निजे 10 सेकेंड्स तापर तो आमे हाँ एठी गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस मु कहि दोची जेतेबेले मु एठी डिस्क्राइब करबी आंसर जेमति कि हमर बेसिक इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट रे हैला मु सब हेडिंग्स कौन दिया जीवो बॉडी रे मु कहबी इंट्रोडक्शन केमिति फ्रेम हबो कहबी कंक्लूजन केमिति फ्रेम हबो कहबी देन सब हेडिंग्स तळे कोन कोन बुलेट पॉइंट्स रे आपणकर डेटा रहिबो सेटा भी मु कहबी एग्जांपल्स हमें डिस्कस करबा जोठी एग्जांपल देई हबो ठीक अछि सबु सब हेडिंग एंड सबु बुलेट पॉइंट तळे एग्जांपल दिया हेतिबो एटा जरूरी नाही एंड आई विल यूज शॉर्ट फॉर्म्स फ्रेजेस keywords also so tie मन देकी सुनिबे this is not practically possible कि 250 to 300 words रो each answer जोटा कि आपण सेठी जाई कि 1.5 hours रे लिखि थांते मु एठी ताकू डिस्क्राइब करी करी कि 3 hours 4 hours रो क्लास हे जिवो सो बी अटेंटिव अ बिट एंड मु जहा डिस्क्राइब करबी ताकू भलसे मन देकी सुनिबे मु शॉर्ट फॉर्म्स यूज करबी तारो फुल फॉर्म भी कहबी कोन सो ठीक अछि ओके तो ए क्वेश्चन ता समस्त पढंतु 10 सेकंड्स मेडी टाइम दोची समस्त को
क्वेश्चन कहला कि अल्फ्रेड वेजनर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देइतिले वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पचारची कि फर्स्ट पार्ट हमर कोन एठी एड्रेस करियार अछि कि अल्फ्रेड वेजनर एठी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देइतिले ताको फर्स्ट एक्सप्लेन करियार अछि तापर एटा एक्सप्लेन करियार अछि कि से मॉडर्न जियोलॉजिकल थ्योरीज रो डेवलपमेंट को केमिति कंट्रीब्यूट कला सो अल्फ्रेड वेजनर मु एमती लेखिबी ठीक अछि पूरा पूरा जदी मु लेखिया को जिबी ताले क्लास बहुत लंबा हे जिवो एंड समस्त का टाइम वेस्ट हबो सो अल्फ्रेड वेजनर 1912 रे से कोन प्रपोज करतले से एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रपोज करथिले एंड से कहिथिले कि जो हमर एबे जो प्रेजेंट डे जो कॉन्टिनेंट्स गुडा हैला दे वर वंस जॉइंड एंड से जो जॉइंट फॉर्म हैला एमती एमती जॉइन हे कि सेटा थिला ताको कहउतले से पैंजिया और सुपर कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट ठीक अछि आ पैंजिया को सराउंड करी कि थिला ओशन बॉडी गोटे ताको कहउतले पैंथलासा ओके तापरे पैंजिया कोन हैला तापरे सी टू पार्ट्स रे एमती डिवाइड हैला जहा को कुआ गला लोरेशिया आ एटा को कुआ गला साउथ पार्ट को गोंडवाना लैंड ठीक अछि तापरे एमती से माने फर्दर डिवाइड हेई कि ड्रिफ्ट अपार्ट हेले एंड ए जो रेवोल्यूशनरी आइडिया थिला कहारो अल्फ्रेड वेजनर करो this revolutionary idea challenged the then prevailing belief of static continents सेतबेले कोन समझते बिलीव करथले कि कॉन्टिनेंट्स एबे जो जेमती अछंती से माने स्टैटिक से माने केबे भी मूव करि नांती तो से जिंसडा को से कोन करथले चैलेंज करथले challenged the then prevailing idea of static continents एबे देखिबा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कोन थिला तार की फीचर्स कोन थिला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एबे आसला मेन पार्ट एठी हमें की फीचर्स अगर डिस्कस करिबा बी अटेंटिव कोन कोन इंक्लूड करिवे आंसर रे आपनकर की फीचर रे एक्जिस्टेंस ऑफ व्हाट फर्स्ट रे लिखिबे पैंजिया रो एक्जिस्टेंस माने एबे जो प्रेजेंट डे रे हमरो कॉन्टिनेंट्स हमें देखिया को पाउजे दे आर ऑल यूनाइटेड एज पैंजिया एंड सराउंडेड बाय पैंथलासा मु जेमति कहि छी लेटर से माने कोन हेले एमति डिवाइड हे गले एटा लोरेशिया हे गला एंड एटा गोंडवाना लैंड हे गला ठीक अछि लोरेशिया नॉर्थवर्ड मूव कला एंड गोंडवाना लैंड साउथ देन सेकंड फीचर कोन ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट्स मानकर ड्रिफ्ट केमती हला कॉन्टिनेंट्स दे आर मेड अप ऑफ लाइटर एलिमेंट ठीक अछि सियाल जोटा कि जो डेंसर सीमा अछि ता उपरे फ्लोट करे ओके एंड दे ड्रिफ्टेड स्लोली टू देयर एबे जो तांकर करंट पोजीशन अछि से माने धीरे धीरे से पोजीशन को शिफ्ट करिसंती एंड ए जो जिंस हमें देखिले ता पई एविडेंस भी थिबा दरकार नले लोक सपोर्ट केमती करिवे साइंटिस्ट हो लोक माने होंतु से माने सपोर्ट केमती करिवे ए थ्योरी को सेति पई कि एविडेंस भी किछि दिया जाइतला सपोर्टिंग एविडेंस सपोर्टिंग एविडेंस रे फर्स्ट हमर कोन आसीबो जिग्सॉ फिट जिग्सॉ फिट माने कोन जो कोस्ट लाइन थिला साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका रो सेटा मैच होतिला माने गोटे जिग्सॉ भलिया सेटा मैच होतिला गोटे पजल जेमती मैच हे जाए ठीक अछि सेटा सेमती मैच होतिला मोटे एग्जांपल देखै छी गोटे पजल दा सेना सेमती मैच होतिला सो एटा हाउ इज इट पॉसिबल जदि कॉन्टिनेंट्स माने आगरो ही एमती दूर दूर हे के अछंती सेपरेट हे के अछंती ताले ता कोस्ट लाइन केमिति फिट हे पारुची फॉसिल कोरिलेशन सिमिलर फॉसिल जेमती मेसोसोरस हैला
से माने कौन अलगा अलगा कॉन्टिनेंट जो गुड़ा एबे माइल्स अपार्ट अछि से सबुरो कोस्ट लाइन रे से गुड़िक लैंड्स रे देखिया को मिलिला एंड से फॉसिल गुड़िक इट इज एविडेंट कि से रेप्टाइल्स गुड़िक पहरी की तो जाई परिबेनी ठीक अछि इट इज एविडेंट कि कॉन्टिनेंट्स आगुरो जॉइन हेगी थिले रॉक स्ट्रक्चर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अक्रॉस ओशंस matching geological formation across oceans. Then fourth evidence कौन paleoclimatic evidence मान जो glacial deposits थिला it is now in tropical regions so एटा भी गोटे evidence आ गोटे कौन की feature forces proposed माने वेजनर सजेस्ट कले कि जो पोल फ्लिंग फोर्स रहिला से कहले कि कॉन्टिनेंट फर्स्ट एकाठी थिले तापर ब्रेक डाउन कले तापर अलगा अलगा हेगी गले एबे से मूव केमिति कले हमको सपोर्टिंग एविडेंस मिलिला कि आगुरु एकाठी थिले देन मूव करके अलगा हेगी अछंती बट मूव केमिति करछंती तार एविडेंस के दबो से कहले कि गोटे पोल फ्लिंग फोर्स थिला एंड टाइडल फोर्सेस they are responsible for their movement किंतु एई जो दीटा एई जो फोर्सेस प्रपोज्ड रे सी एठी कोन हला तांकर एठी रिजेक्ट हे गला थियोरीटा काहेकि ना एई जो फोर्स दीटा से कहिथिले these were inadequate सो तांको मेजर क्रिटिसिज्म एठी मिलिला किंतु तथापि हमें तांकर कंट्रीब्यूशन देखिबा कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न जियोलॉजिकल थियोरीज मॉडर्न जियोलॉजिकल थियोरीज रे फर्स्ट ऑफ ऑल तांकर कंट्रीब्यूशन होचे प्लेट टेक्टोनिक्स पई प्लेट टेक्टोनिक्स पई जेमती वेजनर कोन कले से जो प्लेट टेक्टोनिक्स रो जो कॉन्सेप्चुअल बेस थिला 1960s रे जो आसीबो प्लेट टेक्टोनिक्स ता पई जो कॉन्सेप्चुअल बेस थिला ताकू फर्स्ट ले कले वेजनर्स आइडिया लेड द कॉन्सेप्चुअल बेस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स लेटर जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हे गला mantle convection हे गला it validated the continental movement second development of sea floor spreading theory एथिरे कोन हबो जेमति कि साइंटिस्ट माने हमर हैरी हेस हेले से कोन कले कि नुआ क्रस्ट केमिति फॉर्म होची मिड ओशनिक रीज रे एठी कोन होची लावा एठी ऊज आउट होची तो लावा जेठी एपट साइड रे बोथ साइड रे कूल डाउन होची तो एठी कोन होची एमती क्रस्ट फॉर्म होची कूल डाउन हे गले सॉलिडिफाई हे होची डेंस हे होची क्रस्ट फॉर्म होची देन बट लावा तो कंटीन्यूअसली ऊज आउट ही होची ना जेतेबेले पुनी फर्दर ऊज आउट हबो से कोन करबो ए जो क्रस्ट फॉर्म हेची ताकू फर्दर एपट को पुश करिवो ताकि नुआ क्रस्ट पई कि जागा बनिवो एंड नुआ क्रस्ट एठी फॉर्म हबो एमती प्रोसेसटा चले सो से जो कहले कि मिड ओशनिक रीज रे जो नुआ क्रस्ट फॉर्म होची हैरी हेस से एविडेंस देइथिले कंफर्म करथिले कि कॉन्टिनेंट्स मूव विथ द प्लेट्स थर्ड हैला कि अंडरस्टैंडिंग अर्थ्स डायनामिक नेचर अर्थ्स dynamic nature he shifted actually geology from static to dynamic earth model जेमति कि he explained the earthquakes the volcanoes the mountain building etc ठीक अछि then integration of geological evidence encouraged multidisciplinary approach जेमति geology paleontology climatology okay conclusion initially कौन हेतला ना तांको थ्योरी रिजेक्ट ही जाइतला दो इनिशियली रिजेक्टेड वेजनर कर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थिला इट बिकेम द कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी ठीक अछि सो इट ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन अर्थ्स एवोल्यूशन and ultimately led to the comprehensive theory of plate tectonics right explaining major geological phenomena बुझेला
OPSC and UPSC optional ପାଇଁ कि PSIR ओडिया and home science सेठी OPSC ପାଇଁ तो एठी लॉन्च हेई सारची जेमति कि देखि पारुथिबे तो तीनटा जाकरे आपनको सेम प्रोविजन्स मिलिबो जेमति कि 100% आपनकर सिलेबस कवर कर दिया जिवो वन ऑन वन मेंटरशिप अछि देन आंसर राइटिंग आपण प्रैक्टिस कर परिबे नोट्स एंड मटेरियल्स आपनको जहाँ भी एग्जाम ପାଇଁ कि रेलेवेंट सब प्रोवाइड हेई जिवो एडमिशन इज currently open and for more information contact this number. Next question, discuss the role of convection currents and sea floor spreading in explaining the movement of continents. 10 seconds doji to understand the question. Read it again. Introduction ठीक अछि so question कौन कहिछि कि convection currents discuss the role of convection currents and sea floor spreading in explaining the movement of continents. Convection current और sea floor spreading रो रोल को डिस्कस करबा को कहिछि in explaining the movement of continents. So introduction हमें दबा introduction ଆମର जो movement of continents अछि it is best explained by modern theory जेमति कि ଆମର plate tectonics हेगला which builds upon earlier ideas of continental drift आमे देखिले and आउ गोटे कोन दीटा की mechanism हमर अछि गोटे होछि mantle convection currents and sea floor spreading जे कि provide करे the driving and evidential basis driving and evidential basis for this movement. Okay, first हमें देखिबा convection currents in the mantle जे कि गोटे driving force. mechanism कोन mechanism होची कि जो earth रो core रहिला heat from earth's core creates convection currents. earth रो core create convection currents जोटा कि in the semi fluid asthenosphere. तो कौन हबो hot material जो थिबो it rises then cools down and then sink करि जिवो जोटा कि गोटे कोन क्रिएट कला एठी गोटे साइक्लिक मूवमेंट एठी क्रिएट हला ठीक अछि तो कॉन्टिनेंटल मूवमेंट रे आंकर कोन रहउची हाथ रहउची तो एई जो करंट रहिला जोटा कि हॉट
एटी मैग्मा एटी राइज करूची देन कूल डाउन होची देन सिंक करि जाउची तो एटी गोटे जो साइक्लिक पैटर्न एटी क्रिएट होची इट ड्रैग द ओवरलाइंग लिथ आ ऊपर कौन अच्छी एमती लिथोस्फेरिक प्लेट्स अच्छी तो ये जो करंट आईटी फॉर्म होची एटी जो साइकिल फॉर्म होची से कौन करूची एपट को ताको ड्रैग करूची causing the continent to move and एटी कौन होची divergence होची where currents rise convergence where they sink ठीक तापरे significance आर देखिबा now what is the significance significance होची कि they provide the driving force जोटा कि अल्फ्रेड वेजनर का थ्योरी रे मिसिंग थिला explains plate boundaries explains plate boundaries जेमती कि divergent कौन हबो convergent रे कौन हबो transform रे कौन हबो एबे हम देखिबा sea floor spreading mechanism of movement फर्स्ट हमें mechanism देखिबा धर एटा होची plate 1 ignore my poor drawing just कॉन्सेप्ट ऊपर फोकस करेंगे एमती कि छोटा रफ ड्राइंग भी बनई देबे ज्योग्राफी रे बहुत इंपोर्टेंट कि आपण डायग्राम बनेबे प्लेट 1 एटा धरो प्लेट 2 ठीक अछि कन्वेक्शन करंट हमर एमती अछि चलची मु कहली केमती कन्वेक्शन करंट राइज होची कूल डाउन होची देन सिंक करूची कन्वेक्शन करंट भी चलची ठीक अछि मैग्मा एठी कोन करूची एठी राइज होची मैग्मा ठीक अछि एंड एटा धरि देबे एटा होची ओशन एंड एटा होची एट जो गैप रहिला एटा होची मिड ओशियनिक रिज ठीक अछि तो एठी कोन है एठी एमती मैग्मा कोन होथाय एठी राइज करूथाय एंड एठी रिज रे एमती बाहर को जाई कि एठी कोन करे एठी सरफेस रे एठी कूल डाउन हुए एंड एठी एमती जमी जाए ठीक देन जमी गला परे कोन हबो मैग्मा तो कंटिन्यूअसली राइज ही करूची तापरे एठी जो क्रस्ट फॉर्म हेतिबो से कोन करबो ना ताको एपट को पुश करिवो ताकि नुआ मैग्मा एठी सॉलिडिफाई हेई परिबो कूल डाउन हेई परिबो न्यू क्रस्ट फॉर्म हेई परिबो ओके सो एंड ए कांसेप्ट को किए प्रपोज करथिले हैरी हेस एटी प्रपोज करथिले न्यू ओशनिक क्रस्ट जोड़ा फॉर्म होची एट द मिड ओशनिक रिजेस ड्यू टू द राइजिंग मैग्मा मैग्मा कौन होची मैग्मा सॉलिडिफाई होची तापर पुश करूची एठी मु जेमती कहली कि ओल्डर क्रस्ट को आउटवर्ड की एविडेंस कौन से प्रोवाइड करथिले मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग कौन सिमेट्रिकल पैटर्न जोटा कि ईदर साइड ऑफ द रिजेस रे रेकॉर्ड है कि रही जाई थाए एज ऑफ द ओशन फ्लोर एज ऑफ द ओशन फ्लोर होची यंगेस्ट नियर द रिजेस ओल्डर अवे कहीं पाखापाखी सब यंग वाला थिबे ओल्डर देयर अवे सेडिमेंट थिकनेस माने इंक्रीज विथ डिस्टेंस फ्रॉम द रिजेस जेते रिज रु दूर को जिबे सेते तांकर थिकनेस इंक्रीज हबो जेते तांकर जेते ओल्ड थिबे ए जो रिज गुडा सेते तांकर सेडिमेंट थिकनेस अधिका थिबो रोल इन कॉन्टिनेंटल मूवमेंट फर्स्ट में हैरी हेस केमिति एटा हबो देखिले देन की एविडेंस देखिले देन हमें देखिबा रोल इन कॉन्टिनेंटल मूवमेंट जेमति कि कोन होउची ओशन फ्लोर स्प्रेड करूची कॉन्टिनेंट जो एठी अटैच है कि अछन जो प्लेट्स से माने कोन करूचंदी अपार्ट मूव होउचंदी काहेकि ना एठी कन्वेक्शन करंट जोगु एंड राइजिंग मैग्मा जोगु आ सबडक्शन जोन रे कोन होउची ओल्ड क्रस्ट एमती
सबडक्शन जोन रे कौन होची ओल्ड क्रस्ट कौन होची एटी सिंक करी जाउची एंड मेंटेनिंग द बैलेंस. कंबाइंड रोल आंकर देखिबा. कंबाइंड रोल रे कन्वेक्शन करंट दे एक्ट एज इंजिन. जेतेबेले कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग टा कौन हुए सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द प्रोसेस. डायग्राम रे मु देखैली currents से माने कौन they are acting as fuel to this sea floor spreading process. Together they can explain the continental drift, formation of mountains, earthquakes and volcanoes, and also opening and closing of ocean basins. ठीक. Conclusion. कनक्लूजन आम एमती लिखिबा कि कन्वेक्शन करंट आउ सी फ्लोर स्प्रेडिंग टा दीटा जाक प्रोवाइड करूछंती गोटे साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन फॉर कॉन्टिनेंटल मूवमेंट. Okay, and they transformed, actually they both transformed Alfred Wegener's idea into a robust theory of प्लेट टेक्टोनिक्स जोटा कि अर्थ को एस्टाब्लिश करूची एज अ डायनामिक एंड एवर इवॉल्विंग सिस्टम. ओके, सो ओपीएससी ओएस प्रीलिम्स 2026 पाई कि जो माने प्रिपेयर होतिबे एटी जनरल स्टडीज एंड सी सैट पाई. सो कोर्स लॉन्च ही सारी छी ऑलरेडी से माने ए नंबर को जे कांटेक्ट करिवे. सिलेबस कवरेज रोची आपण जीएस1 जीएस2 बोथ रो 1-on-1 मेंटरशिप 36 टा टेस्ट नोट्स एंड मटेरियल्स मिलिबो. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे बहुत ही यूनिक जिंस रोची कि 19 इयर्स चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पीवाईक्यूज आपण को एटी मिल जाउची. ठीक अछि, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दीटा रे आपण नै परिबे. एडमिशन इज करंटली ओपन. Analyze the plate tectonics theory. How does it provide a comprehensive explanation for geological phenomena? Read the question. इंट्रोडक्शन रे कोन लिखिबा क्वेश्चन कोन कहला आउथर हमें देखि देबा कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को एनालाइज करे को कहिची. देन सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन कहला कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को एनालाइज करिया पई कहिची. देन हाउ डज इट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन फॉर जियोलॉजिकल फिनोमेना. क्वेश्चन डिमांड टिके सेम अछि बाकी दिटा क्वेश्चन भलिया. लेट्स सी. सो इंट्रोडक्शन हमें दबा कि आमे जो थ्योरी पढ़िले प्लेट टेक्टोनिक्स रो इट एक्सप्लेन्स कोन अर्थ रो लिथोस्फियर जोटा कि डिवाइड हेची वेरियस रिजिड प्लेट्स रे जे कि मूव करूचंती ओवर सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फियर. एंड एटा केबे इमर्ज हेतला ए थ्योरीटा 1960s अराउंड टाइम रे एटा इमर्ज हेतला जोटा कि आगुरु जो अर्ली आइडियाज थिले ताकू कोन कला यूनिफाई कला. Unified earlier ideas like continental drift, sea floor spreading into a coherent model of earth dynamics. Core principles देखिबा.
कोर प्रिंसिपल्स कौन प्लेट टेक्टोनिक्स रो फर्स्ट ऑफ ऑल होची लिथोस्फेरिक प्लेट्स लिथोस्फेरिक प्लेट्स कौन अर्थ रो जो क्रस्ट रही एंड अपर मैंटल रही दे फॉर्म द प्लेट्स जेमती कि मेजर प्लेट्स हमर अछि माइनर प्लेट्स अछि एंड से माने कोन ए जो प्लेट्स गुडी को रहले दे आर रिजिड एंड कांस्टेंटली मूविंग सेकंड टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज रे हमर डाइवर्जेंट जीवो देन कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म डाइवर्जेंट कौन दीटा प्लेट एमती थिबे एंड से माने धरो एमिति ऑपोजिट डायरेक्शन रे मूव करथिबे प्लेट्स मूव अपार्ट न्यू क्रस्ट फॉर्म जेमति हम मिड ओशियनिक रिज रे देखले ताको कहवा जाय डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कन्वर्जेंट कौन दीटा प्लेट एमती परस्पर आड़ को मूव करथिबे ताको कहवा जाय कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड एतरे कौन हुए एतरे माउंटेन फॉर्मेशन हुए फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होची ए टाइप रो थिबे धर दीटा प्लेट एमती रहिले गोटे एपट को मूव करथिबो तो गोटे एपट को मूव करथिबो ओके ताकू कहवा जाय ट्रांसफॉर्म्स एंड एथरे कोन हुए एथरे अर्थक्वेक्स आसे आउ थर्ड आमे कोर प्रिंसिपल रे देखिबा कि ड्राइविंग मेकानिज्म कोन एठी हमर मेंटल कन्वेक्शन देन स्लैब पुल ridge push okay drive the plate motion explanation of geological phenomena जियोलॉजिकल फिनोमेना रे हमें फर्स्ट देखिबा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कोन कॉन्टिनेंट्स से माने भी प्लेट भलिया मूव करूछंती जोटा कि अल्फ्रेड वेजनर का हाइपोथेसिस को वैलिडेट करे देन हमरा आसीबो अर्थक्वेक्स जोटा कि मु देखे कहली कि प्लेट बाउंड्रीज पाखरे से माने दे ऑकर along the plate boundaries due to stress accumulation and release ट्रांसफॉर्म एंड कन्वर्जेंट बाउंड्रीज रे से माने कोन थांती मोस्ट एक्टिव थांती देन वोल्केनिज्म जब मैग्मा राइज करे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज रे आउ सबडक्शन जोन क्रिएट हुए इट एक्सप्लेन्स द वोल्केनिक बेल्ट लाइक द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आउ कोन माउंटेन बिल्डिंग और ओरोजेनी भी हमें कही दवा को ओरोजेनी ये कौन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जोटा कि जो थे कौन हुए मु कहली कि फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हुए हिमालयाज हमर गोटे फोल्ड माउंटेन ड्यू टू द इंडिया यूरेशिया कोलिजन आउ कौन एक्सप्लेनेशन अछि ओशन बेसिन फॉर्मेशन सी फ्लोर स्प्रेडिंग कौन करछि क्रिएट करछि एक्सपांड करछि ओशन बेसिन को सबडक्शन जोन रिसाइकल करछंती ओशनिक क्रस्ट को देन आउ गोटे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल एंड मिनरल्स fossil and minerals it explain karanti it explains the matching fossils across the continents and mineral belts कोन पई एटा गोटे कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी why it is a comprehensive theory फर्स्ट होची तार इंटीग्रेटिव नेचर से जियोलॉजी जियोफिजिक्स पैलेंटोलॉजी ए सब को कंबाइन करिकी चलुची प्रेडिक्टिव पावर रे प्रेडिक्ट करूची अर्थक्वेक्स कोठी हबो वोल्केनोस कोठी हबो
Global applicability. Global applicability रे both continental और oceanic process को explain करूची. Dynamic earth model. Replace କରୁଛି static view with continuous evolution. Conclusion रे जो plate tectonics theory रहिला, it is the cornerstone of what modern geology, जे कि कौन करूची गोटे यूनिफाइड आउ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूची फॉर डाइवर्स जियोलॉजिकल phenomena. Not only it validate earlier theories, but also it provides predictive and practical insights into what? Into Earth's dynamic process. वैल्यू एडेड फीचर और कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट एटी समस्त कोर्स रिलेटेड देखिया को मिलिबो. टोटल लर्निंग इकोसिस्टम रे हमें देखले रिवीजन सपोर्ट आपन को GS1 CSAT दीटा रे मिलिबो. लाइव इंटरैक्शन भी वन ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप एक्सक्लूसिव रिसोर्सेस जेमती मु कहली 19 इयर्स रो PYQ सॉल्वड आपन को ऑलरेडी मिलिबो. 36 टा टेस्ट रो ब्रेकडाउन हमें देखले GS1 रे 28 टा टेस्ट देबे, CSAT रे 8 टा टेस्ट एंड 28 टा टेस्ट विथ 22 टा सेक्शनल 6 टा फुल लेंथ एंड CSAT रे 8 टा विथ 4 टा सेक्शनल 4 टा फुल लेंथ टेस्ट रहइबो. ठीक अछि. Next, examine the relationship between fundamental rights, DPSP and fundamental duties. आ भितरे गोटे पचारसी relationship कौन है तीनटा भितरे. How do they complement each other in the Indian Constitution? Read the question. आमे जानजे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे Indian Constitution harmonizes what? Rights, responsibilities and governance ideals through part 3 IV and IVA. Part 3 kono fundamental rights, eta kono DPSP, eta hoji fundamental duties, and together they form ethical and functional core of a welfare state as envisioned by the Constituent Assembly. Okay. First हमें देखिए fundamental rights. Fundamental rights, justiciable guarantees. केते रु केते अछि आर्टिकल 12 रु नेकी 35 जाके अछि. So it ensures what? It ensures individual liberty, equality and protection. Protection का ठारू? Protection state ठारू. Enforceable by the courts. Enforceable by the courts. For example, right to equality, freedom, constitutional remedies, and act as a limitation on state power. बुझेला. Second देखिबा DPSP welfare goals. एमाने केते रु केते आर्टिकल भितरे इंस्ट्रेंट अछंती. Article 36 रु 51. They are the non justiciable part किंतु governance पाई की important for
गवर्नेंस ठीक अच्छे एंड एमानकर एम कौन देयर एम इज टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर एग्जांपल इक्वल पे हैला पब्लिक हेल्थ हैला एनवायरनमेंट हैला एंड एमाने कौन करंदी एमाने स्टेट को गाइड करंदी इन व्हाट इन पॉलिसी मेकिंग 3 फंडामेंटल ड्यूटीज आ एमाने कौन एमाने होचनी मोरल ऑब्लिगेशंस मोरल ऑब्लिगेशंस एंड एमाने केबे ऐड हेतले 1976 रे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू रु ऐड हेतले एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आउ गोटे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हेतिला एंड दे एनकरेज द सिटीजन रिस्पांसिबिलिटी जोड़ा आमे कहूजे मोरल ऑब्लिगेशन बोली कि एग्जांपल कि कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट देबे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिवे they are also non justiciable like the DPSP but normatively binding okay fourth pillar रे हमें डिस्कस करबा कि केमिति कॉम्प्लीमेंट करूचंती how they are complementary to each other balance का भितरे fundamental rights DPSP and fundamental duties balance between rights and social justice तो एटी balance कोथरे फॉर्म होची rights and social justice रे एटी फॉर्म होची fundamental rights से माने कोन करछंती से माने individual freedom को ensure करछन जेतेबेले कि हमर हमें देखिले DPSP कोन करची collective welfare को promote करूची ठीक अछि judicial harmonization जुडिशियल हार्मोनाइजेशन कौन जमी केशवानंद भारती केस देखले सुप्रीम कोर्ट कौन कहला कि फंडामेंटल राइट्स आउ डीपीएसपी केशवानंद भारती केस एटी कोर्ट करबे कि फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी दे आर कॉम्प्लीमेंटरी ठीक अछि नॉट कन्फ्लिक्टिंग एंड इट इंट्रोड्यूस्ड आल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी ए केस थ्रू इंट्रोड्यूस हला एंश्योरिंग द बैलेंस थर्ड कॉम्प्लीमेंटरी फैक्टर होची ड्यूटीज रीइंफोर्स राइट्स ड्यूटीज रीइंफोर्स राइट्स जेमति कि फंडामेंटल राइट दे एक्ट एज एथिकल सपोर्ट सिस्टम फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज से को भले एक्ट करंती एथिकल सपोर्ट सिस्टम फॉर फंडामेंटल राइट्स example duty to protect environment strengthens the right to life d policy to practice link dpsp एठी कोन करूची गाइड करूची लॉज को एंड फंडामेंटल राइट्स एठी कोन एंश्योर करूची कि लीगल एनफोर्सिबिलिटी एंड fundamental duties it ensure the citizen participation example right to education reflects dpsp and fundamental duties evolution through amendments through केमिति इवॉल्व हो जंदी पार्लियामेंट से कोन करछ तारा अमेंडमेंट को यूज करछ टू अलाइन फंडामेंटल राइट विथ डीपीएसपी गोल्स ओके कंक्लूड केमिति करबा हमर फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज एमाने मिसी की कोन करूचंती गोटे बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्रिएट करूचंती जे कि इंडिविजुअल फ्रीडम सोशल जस्टिस आउ रिस्पांसिबिलिटी को एनकरेज करूची अमंग द सिटीजन्स एंड देयर हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ensures that India progress as a democratic and welfare oriented state.
ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स रे जो डिवाइड एंड मॉडल डिवाइड एंड मूव ऑन अप्रोच फॉलो हुए जेमती कि दीटा सब्जेक्ट को अलग अलग करिकी पढ़िबा ताको ब्रेनस्टॉर्म न करिबा ताको परस्पर सहित इंटरलिंक न करिबा एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप न करिबा एथरे सेटा होउनी सो एथरे गोटे इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी आपनकर फॉर्म हो सो मूविंग फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनटू कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और एप्लीकेशन. Next, the understanding of Earth's dynamic nature has evolved through various theories. Critically analyze the contribution of continental drift theory, convection current theory, seafloor spreading in the development of the plate tectonics. Already एसବୁ ଆମେ detailed discuss କରି ସାରିଛି ଏଠି ଖାଲି ମୁଁ structure ବତେଇ ଦେବି କି କେମିତି structure କରିବେ କୋଉଠି କ'ଣ add କରିବେ ବାସ୍ without wasting any time आपको first 15 seconds ଦଉଛି ଆକୁ ଥରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କି କୋଉଠି କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବେ କାହିଁକି ନା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ତିନିଟା ଯାକ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରି ସାରିଛେ ଠିକ ଅଛି ଓକେ इंट्रोडक्शन आमर जो मॉडर्न थ्योरी रहिला प्लेट टेक्टोनिक्स रो एंड एटा सेमती कैजुअली ए थ्योरीटा डेवलप हैनी इट इज द रिजल्ट ऑफ क्यूमुलेटिव साइंटिफिक प्रोग्रेस जेमती अर्लियर थ्योरी जेमती कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हला कन्वेक्शन करंट हला सी फ्लोर स्प्रेडिंग हला ए तीनटा जाक को मिसी की ईच कंट्रीब्यूटेड क्रिटिकल इनसाइट्स टू दिस मॉडर्न थ्योरी along with limitations आमे देखिबा फर्स्ट आमर कहला फर्स्ट आमे देखिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जोटा आमे ऑलरेडी डिस्कस करि सरचे इन प्रीवियस क्वेश्चंस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहला आपण कोन कोन लिखिबे एतरे कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन एठी आमे देखिबा आकु देइथिले किए अल्फ्रेड वेजनर देइथिले एंड से कहला कि पांजिया थिला ठीक अछि जहा कि कॉन्टिनेंट्स माने ड्रिफ्ट हे गले फर्स्ट डायनामिक व्यू ऑफ अर्थ देन एविडेंस एथरे प्रोवाइड हेची एंड एविडेंस कोन कोन प्रोवाइड हेची आमे देखिचे कि जिग्सॉ फिट हेला फॉसिल्स हेले रॉक कंटिन्यूटी देन पैलियोक्लाइमेटिक ये सब एविडेंस एंड इट चैलेंज द अर्थ रो स्टैटिक कांसेप्ट लिमिटेशन आर कोन हे गला लिमिटेशन एया कि आर कोन जो ड्राइविंग मैकेनिज्म से ताकू इनफ एक्सप्लेन करि पारलानी could not explain the driving mechanism और जो फोर्स गुड़ा से जो सजेस्ट कले जो पोलर फ्लिंग फोर्स हैला एंड टाइडल फोर्स हैला एगुड़ा का सफिशिएंट नथिला सेकंड हो जे कन्वेक्शन करंट थ्योरी याकू किए आर कंट्रीब्यूशंस कोन एटा कहला कि जो मैंटल रे कन्वेक्शन करंट्स थाए एंड इट ड्राइव्स द प्लेट मूवमेंट explained divergence and convergence of the plates provided missing mechanical explanation for the drift limitation होची कि जो early models थिला सेटा simplistic आउ lagged basic evidence and did not fully explain exact plate motion no exact plate motion explained then third sea floor spreading एथरे केम आमे देखिले कि ओशन रिजेस रे केमिति कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एठी फॉर्म होतिला क्रिएशन ऑफ न्यू क्रस्ट एट ओशियनिक रिजेस provided that strong evidence via magnetic stripping edge of ocean floor ठीक अछि explain how continents move with the oceanic plates and आर लिमिटेशन कोन थिला लिमिटेशन होची कि इनिशियली एटा फुली एक्सप्लेन करि परलानी सबडक्शन mechanism को and needed integration with convection theory for completeness
synthesis into plate tectonics theory. Integrated contribution जेमती continental drift theory कौन देला idea देला कि केमिति continents move हेले then convection current theory देला कि driving force कौन हबो sea floor spreading केमिति contribute कला से mechanism explain कला and evidence देला ठीक अछि then आंकर outcome कौन बाहर के आसिला outcome formation of comprehensive plus evidence based theory. Conclusion. प्रतिटी theory संगरे with each theory तार किछटा limitations अछि in isolation. आउ तार जो integration होउची तीनटा जाक theory रो तीनटा जाक theory रो जो integration होउची it led to the robust framework of plate tectonics and ए जो evolution टा रहिला this evolution highlights progressive and self correcting nature of science. Self correcting nature of science जे कि transform करूची fragmented ideas into a unified understanding of Earth's dynamic processes. Last question ajiro similar achi question number 3 ki 4 ku Indian constitution seeks to balance individual right with social welfare and civic responsibilities. Discuss the role of fundamental rights, DPSPs and fundamental duties in achieving this balance. Read the question. Indian constitution create करे गोटे nuanced balance between individual liberty, social justice plus civic responsibility through what? Through part 3 plus IV plus IVA. Part 3 कौन fundamental rights, part IV DPSP directive principles of state policy, IVA होची fundamental duties, and together they reflect the democratic welfare state. बुझेला फर्स्ट आमे देखिबा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टी. प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टी आम देख खाली मुझे कही दौची ओवरऑल कहीं सेम पॉइंट से रिपीट करी 12 to 35 आर्टिकल जाए अच्छी सिविल प्लस पॉलिटिकल फ्रीडम को सेफगार्ड कराए इक्वालिटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल चेक्स ऑन स्टेट पावर एंड प्रिवेंट आर्बिट्रारीनेस एग्जांपल होची जुडिशियल एक्टिविज्म एक्सपैंडिंग आर्ट 21 to include right to environment education dignity. Okay. सेकेंड आमे देखिबा DPSP
डीपीएसपी कोटू केते 36 रु 51 जाके अछि आमे देखिथिले एटा नॉन जस्टिसिएबल माने कोर्ट को डायरेक्ट के जाई परिबेनी को इन्फोर्स करिया पई की बट ए माने फंडामेंटल इन गवर्नेंस एम तांकर कि केमिति गोटे सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट हबो प्रमोट वेलफेयर मेजर्स ठीक अछि इक्वल पे हैला पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूरल डेवलपमेंट एगुडी को तापरे थर्ड रे हमरा आसीबो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑलरेडी कहिची 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ऐड हेतिला 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे आउ गोटे ऐड हैला सिटीजन माननकु एटा एनकरेज कराई कि केमिति कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को से माने अफोल्ड करी कि रखिबे जेमति कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट दबा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिबा हार्मनी को प्रमोट करिबा एंड ऑल now we will see achieving balance केमती अचीव हबो कॉम्प्लीमेंटरी रोल्स जेमती की राइट वर्सेस वेलफेयर ओके हार्मोनाइजेशन में ऑलरेडी डिस्कस करछि कि फंडामेंटल राइट कौन एंश्योर करछि फ्रीडम एंश्योर करछि डीपीएसपी इक्विटी जस्टिस एंश्योर करछि लॉज में रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट टू अचीव डीपीएसपी गोल्स बी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रे हमें केस वर्णन भारती केस देखले केमती सुप्रीम कोर्ट एटा डिसाइड कले कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंटरी ही रहबे कोर्ट्स स्ट्राइव फॉर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नॉट कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली देन ड्यूटीज reinforcing राइट्स फंडामेंटल राइट कौन करुछि फंडामेंटल ड्यूटी सॉरी कौन करुछि फंडामेंटल राइट को आउरी स्ट्रेंथन करुछि बाय प्रमोटिंग रिस्पांसिबल बिहेवियर फॉर एग्जांपल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट से फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 रे अछि राइट टू लाइफ ताको सपोर्ट करुछि पॉलिसी सिटीजन आउ स्टेट रो नेक्सस डीपीएसपी कौन करुछि स्टेट रो एक्शन को गाइड करुछि फंडामेंटल राइट एटा प्रोवाइड करुछि लीगल बैकिंग देन फंडामेंटल ड्यूटी एटा एंश्योर करुछि कि सिटीजन माने पार्टिसिपेट करि परिबे डायनामिक इवोल्यूशन अमेंडमेंट्स होची टाइम टू टाइम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स होची जोटा कि फर्दर फंडामेंटल राइट को अलाइन करिछि वेलफेयर गोल्स संगे फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट एटा भी गोटे डायनामिक इवोल्यूशन रो पार्ट कंक्लूड केमती करिया फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज that together create harmonious constitutional triad ठीक अच्छे by balancing liberty कौन बैलेंस करुछंती liberty and responsibility they ensure that कि India evolve as just inclusive and participatory democracy बुझेला this is the last question and last information बहुत ही important आपण पई कि आपण जानथिबे जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बैकबोन सो 19 इयर्स रो पास 19 इयर्स रो 2006 टू नेक 2025 आपनकर एठी लॉन्च हे सरची बुकलेट सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपन को एठी देखिया को मिली जिवो पीवाईक्यू सॉल्व्ड पीवाईक्यूज विथ प्रॉपर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन बुक ऑलरेडी लॉन्च हे सरची ठीक अछि so that is it for today thank you for your patience and thank you for watching जो माने लाइव देखि नांदी से माने भी रिकॉर्डेड जाएगी देखि परिबे एंड
आई होप समस्ते टेस्ट दौथिबे एंड जो माने दौ नांदी आई वुड हाईली एडवाइस कि समस्ते टेस्ट रेगुलरली दियंतु ठीक अछि एंड ए वीक रे जहा आपनकर टेस्ट हबो नेक्स्ट वीक रे हमें तारो डिस्कशन कंडक्ट करिबा ओके डिस्कशन हमें करिबा क्लास रे थैंक यू फॉर वाचिंग